You know, when I made that coffee is a scam wala video, I got a lot of backlash from some people who drink a lot of coffee. And I just want to state कि I have not drunk ही होगा ना, हाँ, I have not drunk my coffee अभी तक सुबह की जो होती है. And I can already tell you कि मेरा दिमाग is rested, but उसके ऊपर एक बोझ टाइप का रखा हुआ है सर. अभी मैं पीऊँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. And if that is not the definition of an addiction, I don't know what is. ठीक है. तो कैफीन एडिक्शन इज रियल. प्लीज गेट योर सेल्फ चेक्ड. दिन में 10 बार कॉफी पीना इज नॉट ओके. कुछ लोग होते हैं और रात में कॉफी पीते हैं क्योंकि हम पढ़ेंगे. व्हाट आर यू डूइंग? लाइक व्हाई आर यू ट्रेडिंग? सो दिस इज योर हेल्थ, राइट? यू कैन नेवर गेट दिस बैक. एंड दिस इज अ डिग्री, अ स्टूपिड डिग्री. It probably doesn't even serve a purpose in the modern world, if you think about it. And I'm being honest, to be very honest. It doesn't serve a purpose in the modern world. I know कि इंडिया के अंदर अभी भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि विदाउट अ डिग्री कुछ नहीं हो सकता. आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए. कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, तुम्हारी सोशल लाइफ नहीं होगी. So a lot of people in the West do it, and that is one thing जो I think kind of have to give props to them. For as much as I bash them, they really do experiment a lot, and it's true. The degree is not that important. It's definitely never worth your sleep. I don't know ये मुझे कितने लोगों को बताना पड़ेगा. So many people undervalue their sleep. ठीक है. I think the only time I stay like थोड़ा सा भी sleep deprived is when there's an actual time sensitive thing that needs to be happened, which is important. Is किसी दोस्त की ट्रेन है या किसी दोस्त को कहीं जाना है या मुझे कहीं जाना है. दैट इज द ओनली थिंग कि जहाँ पे इफ आई स्लेप्ट लेट तो शायद मैं थोड़ा फिर भी जल्दी उठ जाऊंगा. अदरवाइज इफ आई स्लेप्ट लेट, अव्वल तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई डोंट स्लीप लेट, बट इफ आई स्लेप्ट लेट there is no way in hell you're gonna wake me up before my 8 hours are completed. I want a clear mind, and this is what most people don't understand. अभी मैं किताब पढ़ रहा था नवाल भैया की. He said something. He said, you don't understand that the best of the best get paid for their decision making, not for the actual work. Think about it. The richest people in the world that don't actually do the work. वो खुद से कुछ बनाते नहीं. They just decide. They take a good decision. So I think it was Jeff Bezos या पता नहीं कौन Tim Cook who said that I just need to take like 3 good decisions a year and then my life is set. So कहीं ना कहीं that's true. If you take like 3 good decisions, like 3 good important decisions, तो yeah, that is so empowering कहीं ना कहीं. Like that makes me wonder कि if hard work really is the key, because I think hard work at the right place will always beat hard work at the wrong place. अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि moderately hard work at the right place can also beat supreme hard work at the wrong place. Like for example अभी ये ChatGPT था. मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ भाई, इसने तो बहुत हेल्प करी है मेरी. मैंने तो अपने सारे नोट्स इसी से बनवाए हैं. जो बात है, मैं तो इसी से काम करने वाला हूँ आगे जाते हुए. आई जस्ट नीड टू लर्न हाउ इट वर्क्स. ठीक है. इंगेट डिस्कॉर्ड में मैं गया. अब मुझे थोड़ा सा पूछना पाछना कि भाई हाउ डू आई मेक दिस हैपन, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे. सो यू जस्ट नीड टू टिंकर विद दीज थिंग्स. द प्रॉब्लम इज के आई थिंक द ChatGPT थिंग दैट वी आर यूजिंग इट्स स्टिल इन लाइक इन बीटा वर्जन. सो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम यूजिंग माई डेटा टू एक्चुअली ट्रेन द मॉडल. द रीजन फॉर दैट इज के कम से कम वो तुम्हें फ्री में सर्विस तो दे रहे हैं. बाकी चीज़ें तुम्हें फ्री में सर्विसेज भी नहीं देती हैं और तुम्हारा डेटा चुरा लेती हैं. उनके अंदर प्रीमियम वर्जन्स होते हैं बिल्ट इन. इसका भी प्रीमियम वर्जन आएगा ऑफ कोर्स, and but I think that would be paid and that would be supremely expensive because of how good it is. It's terrifically good. If you know how to use it, if you know what to say, you're gonna win. So मैं इसी को यूज़ कर रहा था, and I think कि अगर मैं इसको किसी तरीके से लेवरेज कर पाऊँ, like this is no code, समझ रहे हो? The idea is कि there are 4 types of leverages, right? Capital, as in पैसा. आपको जितना पैसा आप उसे इन्वेस्ट करते हैं वो आपको output दे देगी, more money. Then you have labor. If you have a lot of people working for you, that can help you. Media, which is this video, right? This video, let's just say 1 year down the line, 2 year down the line, I take off on YouTube, मैं viral हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा. People will have these videos to come back to, right? Like they would be like, चलो देखते हैं अब्दुल्ला ने कहाँ से शुरू किया था.
and they'll come back to this room, they'll come back to Noor Nagar, they'll come back to my friends. There's a whole story, it's a whole universe built around me. Think about it, एक बार. Then there is code, which is of course फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो. यू थिंक मार्क जकरबर्ग रोज उठ के क्या कहते हैं अपनी दोनों कंपनीज देखता होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कैसे चलते हैं? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. सो आई थिंक चैट जीपीटी इज़ वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज ऑफ इट्स नो कोड एबिलिटी, कि बिना कोडिंग के एक्चुअली आप कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई कैन सिंपली राइट इन इट, राइट मी JavaScript code that does ye, and it will actually give me that. How crazy is that, yaar? I can get actual code from it. Oh my freaking god. Crazy, yaar. मतलब as we are moving in the future, मुझे कभी कभी लगता है ना कि you really will be paid for your judgment alone, because that is one thing जहाँ पे AI कभी ना कभी कतरा सकती है. अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा एआई की लिमिटेशन पे, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इसकी कोई लिमिटेशन है भी या नहीं है. बिकॉज राइट नाउ द ओनली टाइम्स आई हैव सीन द चैटबॉट फेल इज व्हेन इट इज आस्क्ड फॉर ओपिनियंस. डू यू नो व्हाई? बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन अलाउड बाय इट्स कंपनी टू गिव ओपिनियंस. ऐसा नहीं कि वो ओपिनियन बना नहीं सकता, बट इट हैज़ नॉट बीन अलाउड बाय ओपन एआई टू गिव ओपिनियंस. ए बी 2021 के बाद जो इवेंट्स हैं, बिकॉज उसकी नॉलेज उसके अंदर प्रोग्राम नहीं है. एंड येस, इट्स नॉट स्काउरिंग द इंटरनेट. वो इंटरनेट से नहीं ले रहा है अपना इन्फॉर्मेशन रियल टाइम के अंदर. उसने ये सारा का सारा डेटा जो है बिलियंस ऑफ टेक्स्ट को स्कैन करके अपने अंदर सेव करके फिर वो आपके पास आया. सो इट्स नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, विच इज द क्रेजियर पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस. कि आपको लग रहा होगा ना कि वो इंटरनेट से पुल कर रहा है. इट इज पुलिंग इट फ्रॉम द इंटरनेट इन सम सेंस, बट इट हैज ऑलरेडी बीन पुल्ड फ्रॉम द इंटरनेट बिफोर हैंड. सो इवन इफ इट्स नॉट कनेक्टेड, लाइक ये रियल टाइम में नहीं हो रहा, उसके पास इन्फॉर्मेशन स्टोर है. एंड इट्स लाइक यू नो चूजिंग डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, और उनको साथ में ऐसे मिला रहा है ताकि एक कोहेरेंट आंसर बन के आपके सामने आ जाए. भाई वाओ. When you think about it, babies take time to do this. Babies की जो क्या, how old children must be? I think around 10 साल के बच्चे जितनी उसकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी तो होगी यार. मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा होगी. Somebody would have to actually pull up the facts on this. I'm not very sure, but so interesting यार. मज़ेदार है यार. बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि आई एम नॉट श्योर अगर मनदीप सर ही हम लोगों को कोचिंग करवाएंगे, मतलब बॉक्सिंग करवाएंगे. द रीज़न फॉर दैट इज़ कि उनके जो ट्रेनिंग कैंप था बाली में, आई थिंक इज़ गोइंग. मुझे पता नहीं इफ़ ही फाउंड अ स्पॉन्सर और नॉट, बट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट मुझे ऐसा लग रहा है कि ही वुड बी गोइंग. सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. आई रियली होप ही गेट्स द मोस्ट आउट ऑफ हिज ट्रेनिंग. एंड इसकी वजह से उनके जो दोस्त हैं हर्ष, तो हर्ष हम लोगों को करवाने वाले हैं, विच वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. क्योंकि उन्होंने हम सबसे पूछा कि यू नो आप कौन सी इंटेंसिटी पे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं. लेकिन आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि मनदीप सर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डीपली ग्रिल करते थे. बिकॉज यू नो जिस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया कि हमारी ट्रेनिंग यूजुअली ऐसी होती है, लाइक ओके ये तो काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग है. आई एम लाइक थैंक गॉड. अगर ये बोल देते ना कि ये तो बहुत ही नॉर्मल ट्रेनिंग है, तो मेरा दिल शायद मुझ पर गिव अप कर देता. मेरा दिल बोलता नहीं 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 मुझसे नहीं होगा. देखो जो बात है, बस बहुत कर लिया तुमने अपने शौक पूरे, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा. लेकिन आई एम ग्लैड के बॉक्सिंग के अंदर अब यू नो आई एम जस्ट क्यूरियस कि हाउ देयर ट्रेनिंग स्टाइल्स आर गोइंग टू डिफर फ्रॉम मी. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज गोइंग कम्प्लीटली फाइन. आई बिलीव कि टुडे इज़ द वर्ल्ड कप फाइनल्स विच इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे. इट्स वेरी वेरी वियर्ड कि मैं इसके बारे में सिर्फ 9 मिनट मार्क पे बात करना शुरू कर रहा हूँ. Do I have a prediction? I want अर्जेंटीना टू विन, और ये मैं अभी डिसाइड किया मैंने इस वजह से, ताकि वो एक जो ड्रीम है ना अर्जेंटीनियन फैंस का, अर्जेंटाइन होगा, अर्जेंटीन होगा, अर्जेंटीनियन होगा, अर्जेंटीन फैंस, ठीक है, अर्जेंटीन फैंस का एक जो ड्रीम है ना कि भाई उन्हें मेसी को देखना. भाई तू देख ले यार, तू देख ले, तू देख ले, जो करना तू कर ले. आई एम अगेन नॉट अ फुटबॉल फैन, सो इट डजंट रियली मैटर फॉर मी. तो आई होप अर्जेंटीना विन्स. लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हों. आई होप देयर आर सेलिब्रेशंस. पीपल रियली एंजॉय. दिस वाज अ वंडरफुल वर्ल्ड कप ऑल इन ऑल. एंड क्रोएशिया बहुत अच्छा खेली, मोरक्को बहुत अच्छा खेली. ऑल ऑफ दीज, इवन लाइक कंट्रीज लाइक सऊदी, भाई व्हाट इज़ दिस, ये कैसे अच्छा खेल नहीं है इतना, वाओ. कुछ अलग ही हो रहा था. तो दिस वाज ऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया पूरा वर्ल्ड कप. आई डेंट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा देख पाऊँगा.
गिवन कि कुछ मैचेस 12:30 बजे थे। 12:30 बजे वैसे मैंने नहीं देखे, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि कतर के अंदर था, जिसकी वजह से 8:30 PM पे भी 8:30 PM पे भी मैचेस आते थे, तो वो वाले मैचेस आई वॉज एबल टू सी। अब देखो 2026 के अंदर है ना, यूएस के अंदर है, तो करेंगे बिल्कुल रातों रातों में मैच। हाँ, क्या कह रहे हो अब्दुल्ला, तुम भी तो यूएस में होगे। इंशाल्लाह वील हैव टू सी अबाउट दैट। उस सब के डिसीजंस अभी तक नहीं आए वैसे, और पता नहीं क्यों मेरे दिल से मुझे पता है आवाज़ आ रही है कि आई आई थिंक नहीं होगा बाहर, ठीक है। आई एम बीइंग लाइक वेरी रियलिस्टिक एट दिस मोमेंट, क्योंकि दे रिक्वायर अ सर्टेन प्रोफाइल। आई एम मोर स्केर्ड अगर मेरा हो गया, बिकॉज अगर मेरा हो गया ना, तो मैंने अभी जो लाइफ की ट्रेजेक्टरी अपने दिमाग में रखी है वो बहुत इधर उधर हो जाएगी। आई डोंट, how do I say this? Like, I want to counsel people, but I want to counsel them on their business problems, not with their life problems, until and unless they're willing to pay that kind of money for it. And अब तुम लोग कहोगे हाँ मनी से मोटिवेटेड है, हाँ मनी से मोटिवेटेड है, why is that bad? Go ahead, explain it to me, fight me on this. क्यों क्यों बुरा है भाई? स्किल है, मुश्किल स्किल है, पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट इफ़ यू नो इट। माइंड वैली आप लोग लुकअप करके देख लें, वो पूरा एक एस्थेटिक सा एक्सपीरियंस करवाते हैं आपको 3-4 दिन का, इसके लिए आप $3,000 ले लेते हैं। भाई $3,000 नहीं मांग रहा हूँ मैं, $1,000 तो दे दो कम से कम। एंड द टॉप 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 टीयर पीपल जो होते हैं, कुछ हैं साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट रशिया के, दे यूज़ टेक्निक्स जो कि लीगल नहीं है या साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है एज पर यूएस, वो यूज़ करते हैं। दे टेक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, देख लेना। जॉर्डन पीटरसन जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसको जब वो हुआ था अकैस्थेजिया था, पता नहीं क्या था उसको, जो ही केप्ट मूविंग बहुत ज़्यादा, उसने शायद what did he overdose upon? I think it was benzodiazepine addiction हो गया था उसको, राइट। उसको हील करने के लिए वो लोग रशिया ही लेके गए थे। just know that कि one of the foremost clinical psychologists of the Western world went to Russia in order to be treated for his own problems. Just know that, ठीक है। So that is true as well. So I don't exactly see myself in like a counseling role, because मुझे I think I would have to develop the patience for it, which is something good. लेकिन I think it would lack the thrill. I want the thrill. मुझे अच्छा लगता है when somebody is there and they really are betting their entire life savings on something, या फिर they are like neck deep into trouble and they're like I'm not gonna give up. I think that is so inspiring to me. It's the indomitable human spirit. It is beautiful. And I've met people like that who are in those kinds of situations, and when they made it out बाद में, they make it out alive later on, they just changed people, like the stress changes them, it makes them into something else entirely. And I think that is what I think is beautiful. People think aesthetics are beautiful, yes, beautiful. I think the transformation you undergo after a very long bout of stress, that is beautiful. The human being that emerges out of it, and to think that that human being was technically embodied in your former self, कि जो कल का अब्दुल्ला है वो टेक्निकली यहीं इसी स्पिरिट के अंदर कहीं ना कहीं है, like 10 years down the line, after all the stress that he has faced. Can you imagine that the person at the age, the person you would be 60 साल की उम्र में, वो अभी आपके अंदर है टेक्निकली, and it's just that the right triggers are needed to bring it out alive. Crazy man, crazy. तो वो चीज़ें मेरे लिए खूबसूरत होती हैं. So I want to help people out in those do or die type of situations. Of course that would mean कि I don't think I would want to work with बहुत ज़्यादा लोग, because अभी का जो करंट सिनारियो मुझे लगता है ना थेरेपी का, काउंसलिंग का, यू आर सीइंग 10 क्लाइंट्स अ डे बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज अदरवाइज आपका खर्चा पानी नहीं चलेगा. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज आई थिंक के कहीं ना कहीं यू गेट पुल्ड इन सो मैनी डायरेक्शंस, जस्ट सो मैनी पीपल दैट I'm sure people have their own ways of communicating important suggestions,
बट आई थिंक वो एक इंक्यूबेशन भी होना चाहिए ना उस आइडिया का, लाइक I won't I won't be able to incubate solutions for you at the back of my mind if I don't genuinely care for you. And I think it's just genuinely hard for me to care for you if I'm meeting 7 other clients on a regular basis. समझ रहे हो? Am I making sense? I hope I am. So even if I go into something like counseling, my ideal case would be to counsel like 2 people and meet them on a weekly basis. ताकि I genuinely keep their problems in my head. And I know कि counseling के अंदर कहते हैं, this should never happen, never happen. Transference हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Okay, fine. Then explain it to me. How am I supposed to help this person? You expect me to hear their problem and come up with, oh, okay, तुम्हें ये वाला homework की ज़रूरत है. And others might say, oh, you don't exactly have to try and help them. You just listen. Okay, I'm gonna listen. But I still have to ask leading questions now. I won't be able to ask good leading questions until and unless मेरे पास उसकी पुरानी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं हो. Some people में से, well, तुमने केस नोट्स लिए होंगे, वहाँ से पढ़ दो. केस नोट्स आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. इंक्यूबेशन जिस चीज़ का होता है ना, वो नॉलेज है. There's a difference between knowing and understanding. I can know a person and his mental problems through the case notes. I will not be able to understand the person until and unless I expend significant cognitive bandwidth on this person, which is also something that you need to take into account when you go for therapy. A good therapist will charge you more, but at the same time, when you ask him why you're charging him, he would be very upfront about the fact that therapy ends for you in 1 hour. For me, it won't end till the end of our relationship because मुझे सोचना पड़ेगा. I'll still be thinking about your problems, right? Which I didn't need to, technically. You need to, because it's your problem. You cannot escape it. The therapist can escape it, but a good therapist will not escape it. So think about that. काफ़ी लंबा rant हो गया ये फिर से. I'll see you guys.